हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ की। और यहाँ पे मैंने दो कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखा है, कंपास ए एंड कंपास बी। इनिशियली की ओपन है। जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, इस सर्किट में, इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है, बिकॉज ये प्लेट जो है लो पोटेंशियल पे है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो हाई पोटेंशियल पे है। तो करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। ये चार्जिंग प्रोसेस में होता है। अब जैसे ही हमने की को क्लोज किया, हमने देखा कि मैग्नेटिक कंपास ए में डिफ्लेक्शन हुआ एंड मैग्नेटिक कंपास बी में भी डिफ्लेक्शन हुआ। अब मैग्नेटिक कंपास ए में डिफ्लेक्शन तो समझ में आता है, बट मैग्नेटिक कंपास बी में डिफ्लेक्शन समझ में नहीं आता, बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज कोई वायर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। एज एम्पियर्स ने जो इक्वेशन दिया था वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई, एज हियर नो एनी करेंट इज पासिंग थ्रू दिस, hence magnetic field should be 0 according to the Ampere's law. According to this law, when I is 0, B will be 0. But I already observed that here magnetic field is exist, means something is wrong with the Ampere's law, because Ampere's law is not valid in this case. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन से प्रोड्यूस हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे? तो मैक्सवेल ने यह सोचा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है? बिकॉज जब हम की को क्लोज किए, यहां पे चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया। जब कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हुआ, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट प्रोड्यूस हुआ और जो चेंज हो रहा है, तो यहां पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस क्लोज्ड कर्व में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मींस यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि varying electric field also produces magnetic field. Then we can say that magnetic field is produced by the current and by changing electric field also. And हम यहां से ये प्रूव करेंगे, इसी इक्वेशन से हम प्रूव करेंगे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। As Ampere's law says that this equation, consider this equation B dot dl, line integral of B dot dl is equal to mu 0 into I, and I is equal to, when at any instant of time t, charge on the capacitor plate is Q and current at that time is I, then we say that I is equal to dq by dt. And as charge is also varying in nature, so we can say that Q is equal to CV
where V is the potential difference between the capacitor plate, and we know that capacitance of a capacitor is mu 0 epsilon naught A by D, where D is the distance between the capacitor plate, A is the area, and this is V into dt. Here voltage is also changing because electric field between the capacitor plate is changing. Hence mu 0 divided by epsilon naught A by D into, we can say that in place of V, E into D, where E is the electric field. Mu 0 epsilon naught D EA by dt. And we know that EA, electric field into area of cross section, A, and E is the electric field. Hence EA indicates the flux. Here we can write this is flux, electric flux. So from the Ampere's equation, line integral of B dot dl is equal to mu 0 into I. Here we derive the equation B dot dl, line integral of B dot dl is equal to mu 0 epsilon naught d phi E by dt. From this equation, we can say that when electric field is changing, then you can apply this equation to find out the magnetic field due to the changing electric field. And when both electric field is changing and current is also present at the same time, then resultant magnetic field will be magnetic field due to the change, due to the current is mu 0 into I, and due to the changing electric field is this one, mu 0 epsilon naught d phi E by dt. This is the Maxwell equation, and we take common from both mu 0, and here is the I, and this is mu 0 d phi E by dt. Now mu 0 I plus, and you can say that this is ID and this is IC, where ID is equal to epsilon naught d phi E by dt. This ID is the displacement current. Means displacement current will be assumed to be produced by changing electric field.